This election season, a study authored by key members of the Prime Minister's Economic Advisory Council has dealt a hammer blow to the Muslims persecuted in India narrative pushed by an ecosystem in India. As per this study, between 1950 and 2015, the Hindu population's share in India's demography shrank by 7.8% and the share of Muslims grew by 43.15%. In 1950, Hindus had a share of 84% in India's total demography. By 2015, that share declined and it came down to 78%. When it comes to the Muslim community in 1950, the share of Muslim population in India's total demography was 9.94%, and by 2015, the share of Muslims increased to 14.09%. To put it simply, as the country's population increased over the years, the share of the majority community decreased and the share of the Muslim minority community increased. So, to all of those who have complained that Muslims are under threat in India, this data demolishes their scaremongering. Top BJP leaders have drawn a link to the Congress party's Muslim quota pitch. There are others in the BJP who are blaming the Congress party's pro-appeasement policies for the decline in the share of the Hindu population in India as well. ये जो जनसंख्या है इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है, तो कोई जाके चेक कर सकता है कि 1951 की सेंसस में और 2011 की सेंसस में क्या था। मुस्लिमों को संख्या के आधार पर आरक्षण देना चाह रहे हैं तो बढ़ती संख्या पे किस सीमा तक जाके आरक्षण देंगे और किससे काट के देंगे। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप किसको आरक्षण में किसका हिस्सा मारकर और भविष्य में कितना काटने की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसका जवाब दें। बहुत गंभीर चिंता की बात है। जनसंख्या का असंतुलन है। हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है। When one minority community is growing so fast, disproportionately fast, and some political parties want to also give the same community reservation in contravention to our constitution, which prohibits religion-based reservation, then what is the consequence of that on the other deprived communities in our country, like the OBCs, the SCs and STs, who have for many decades suffered for lack of reservation, lack of opportunities? Now, as per this report, it's the share of the Hindu population, the Jain population and the Parsi population that has declined, while the share of the Muslim population, the Christian population and the Sikh population has increased between 1950 and 2015. The study also goes on to do a comparison of the population trends in India and 167 other nations. The shrinking of India's majority population is the second most significant decline among immediate neighboring countries after Myanmar's 10%. It also pointed out that while the majority community in India saw a decline in its share in demography, in countries like Bangladesh and in Pakistan, where Muslims are in majority, their share in their country's total population saw an increase of 18.5% and 3.5% respectively between 1950 and 2015. The opposition is questioning the timing of the study. Leaders like Priyanka Gandhi Vadra have refused to give a specific answer to the issue. Asaduddin Owaisi has dismissed it as a WhatsApp report. Tejasvi Yadav says this report is a way to mislead and spread hate. And the DMK's TKS Ilangovan is of the view that the census data should be made available for all states to understand the truth about India's demography. The Trinamool is also of the view now that the various mentions in the report are not to be taken seriously. Listen in. दीदी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया है 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की
हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये इस कहाँ तरह से आया, पाकिस्तान- ये सवाल कहाँ से आया ऑफिस की आपके पास? हाँ? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। I do not wish to get into a narrative which is set up by the BJP. I'm not getting into it because there are important issues, and this is totally evading those important issues and problems of the country. BJP is evasive, and BJP should be ashamed. There's an article in papers published outside this country where they are mentioning that BJP and the Prime Minister Modi ji, I have the screenshot of it, is sheltering the largest, the mass rapist when they mention Prajwal Rewala. हिंदू आबादी 7.82 घटी है, मुस्लिम और क्रिश्चियन की आबादी बढ़ी है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और